Ages ago, under ancient skies, Mother Earth gave birth to life. With years, life evolved. Oceans rose to heights. Lands collided, and the mighty Himalayas were born. And so were some special herbs, the Sanjeevani, with healing powers that would take care of mankind for the years to come. India once thrived with thousands of these species, each with unique powers. Today, many of these herbs are getting lost. This is a story of the people who put in their heart to save the magic Mother Nature gave us from the heart of Himalayas. Lahaul, Spiti Valley. जटा से ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु सचा। ड्यू मतलब का नहीं पता तोता। अंगु जन्म छुपा, दो मौत छुपी। अंगु मौत छुपा, दो पुनर्जन्म छुपी। That evening, as shadows deepened, the hamlet's worldview shifted with the revelation that rebirth, like the seasons, was an undeniable certainty. Also, they understood the value of their valley, its herbs. They realized the power of their country. जितनी भी जड़ी बूटी हैं जो अभी तक हमारे पहाड़ों से, जंगलों से, जो हमारे चारागाह से आती थी, वो आज विलुप्ति की कगार पे है। आयुर्वेद ही मेडिकल साइंस की जननी है, और जो आयुर्वेद है उसकी जो जन्मदाता है, जननी है, वो भारतवर्ष है। इनको बचाने के लिए तो हम लोगों ने कुछ करना ही था, तो डाबर इंडिया लिमिटेड ने इसके ऊपर एक सराहनीय काम किया, जिससे कि इनका कंजर्वेशन हो सके। इंडेंजर्ड स्पीसीज की सीड सोइंग की जाती है, उसका जर्मिनेशन करके उनके प्लांट्स तैयार किए जाते हैं। प्लांट्स के बाद उनको किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटा जाता है। उसके बाद ग्रेडिंग, पैकिंग करने का पूरे तौर तरीके, ट्रेनिंग प्रोग्राम डाबर अपने स्तर से कराती है। तुंगरिंग यांग में मेरे वही बनाई दूसरों जड़ी बूटी काटला स्टोरी। In the hidden depths of the Himalayas grew the rare herb, Kut, a plant so elusive it once demanded brave souls to venture into the wild at an altitude of more than 3,000 meters, facing untold dangers. Its roots have been primarily used in the treatment of asthma, epilepsy, and cholera for ages. These herbs are older than the human civilization. खेन जटा मानसिस केन यादाश्त ठीक योक्ता क्या होने पुष्कर मूल केन क्या लोहा फेफड़ा ठीक योक्ता। Herbs like Pushkar Mool and Jatamasi have been silently healing mankind since the beginning of time, growing at an altitude of 2,800 to 3,500 meters. Ayurveda says Pushkar Mool is the best drug to cure hiccup, cough, asthma, pain in pleural region, and other respiratory ailments. And Jatamasi, growing in steep, moist, rocky, undisturbed grassy slopes, is useful in insomnia, skin disorders, and is good for hair health. Khaluchum giz ingi bare sirf umid ya to jochinya umid ta hitikar mata. Gun sasati mura niz na lan kaiket pilama elder tupshu maichwo sasat mura lextor elmengi koi tazumai amti manis. Gibuta sasati zu likaniz pia masang enis bukhar ke jigan pia masang enis tal umid thain grochinis ondo. But in those mighty forests, hope existed in the form of another magical plant, Ateech. Ye buta bacheksa tasam dad betitiki temetiki awahen. But one question kept haunting them.
What if all this is lost one day? They say that whenever the world descends into shadows, a hero emerges, poised to rescue all from the depths of despair. जब से डाबर ने इस गांव के साथ जुड़ा है, हमारी उम्मीद फिर से जिंदा हो गई है। डाबर की मदद से किसानों ने नई नई तकनीक सीखी है, जिसकी वजह से किसानों की जीविका में सुधार आए। Yo reket tinggi tung te samja mema mo tu thalang punarjanam shupi hone ali rat rukshu savera shupe shupe. In this vast universe, every action brings a change. Change is the only magic that sustains this balance. A balance to germinate life on earth, to keep Sanjeevani alive. In this journey, India stands as a beacon of hope for generations to come, and hope for keeping the wonder of Ayurveda alive.